Okay, students, our next poem is Patriot into Traitor, and it is written by Robert Browning. First, I would like to tell you something about the poet. Robert Browning was the son of a well read father and a religious mother who had an artistic bent of mind. He inherited creative abilities from his parents. Browning was not formally well educated. His use of diction, rhyme, symbols, and modern poetic style distinguishes him from his peers. He wrote his usual words, but it was not easy to compete with him. Most of his works manifest his own javelin desires and apprehensions. He is well known for his dramatic monologues. ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर मतलब डेफिनेशन बताएं, a dramatic monologue is a speech of a single character with dramatic significance. During this speech, the speaker unveils the situation, getting the audience, and most interesting part is the revelation about his own personality. के स्टेज पे ये ड्रामा बेसिकली ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये अमूमन थिएटर्स में जो ड्रामाटिस्ट होते थे वो यूज़ किया करते थे उसमें कि किसी भी इवेंट के बारे में जो पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है या कोई ऐसी बात जो कैरेक्टर के माइंड के अंदर चल रही होती थी तो उसको ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती थी जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है. अब एक चीज़ होती है डायलॉग और एक होती है मोनोलॉग. और डायलॉग में जैसे आप सबको पता है कि डायलॉग होता है कि मुकालमा दो लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही होती है डायलॉग उसको कहते हैं. तो मोनोलॉग जो होता है वो इसके ऑपोजिट होता है. मोनोलॉग असल में ये वो स्पीच होती है जो एक पर्सन अपने आप से कर रहा होता है, लेकिन वो इस तरह से इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि वो पर्सन बात कर रहा है ख़ुद से, लेकिन उसकी बातों को कन्वे करना होता है कहाँ तक, ऑडियंस तक कन्वे करना होता है. क्योंकि राइटर के पास यही एक ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो किसी भी कैरेक्टर के माइंड के अंदर जो चीज़ चल रही है उसको वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के ज़रिए ही इंट्रोड्यूस करवाता है. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पहली दफ़ा ये टेक्निक जो थी पोइट्री के लिए यूज़ की. और रॉबर्ट ब्राउनिंग को इंग्लिश लिटरेचर में ख़ासतौर पे इंग्लिश पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के हवाले से बड़ा इसको मखसूस किया जाता है दैट ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल दिस थिंग. अब जो इसकी पोएम है अ पैट्रियट इनटू अ ट्रेटर, बेसिकली इसमें द स्पीकर takes through account of his past years as a political figure. कि एक politician है, उसके जो past में जो कुछ उसके साथ हुआ है, he's talking about, he's thinking about all that, he's giving a review to the readers. He experienced a downright aversion for him. The political figure openly tells about the terrible ordeal, a change in political and social order. He is not feeling any fear from the downswing of his career. The speaker reveals aspects of his character as a patriot through telling the story about what he has done to get where he is. और जो टाइटल है, द टाइटल बेसिकली ये रेफ़र करता है पेट्रियोटिज़म को. As it is obvious from the title that Robert Browning's poem Patriot into Traitor tells the story of someone who was considered nationalist, the one for whom the well-being of country is most important, and he never hesitated to go beyond the limits to defend his country from adversaries. The poem also takes account of how he turned into a traitor. The title shows the importance of human nature. It implies that a man who has patriotic passion
for his beloved country, sooner or later develops a treacherous approach. There are clear implications of status reversal from peak to bottom. Furthermore, the title alludes to the social criticism also. सोसाइटी जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, उसका रवैया जो है लोगों के साथ, वो अगर किसी एक को वो एट अ टाइम सोसाइटी कहती है कि ये हमारा हीरो है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि थोड़े टाइम के बाद वही हीरो जो है उनके लिए विलन बन जाएगा. और पेट्रियट इंटू ट्रेटर में यही कुछ हुआ है कि उस बंदे का डाउनफॉल है. Basically, the poem Patriot into Traitor is structured around the themes of violence, death, and downfall from a high pedestal. Another underlying theme is the oscillating human attitudes and behaviors कि किस तरह से इंसानों के रवैये जो हैं और उनके जो मामलात होते हैं दूसरे लोगों के साथ, किस तरह वो within minutes, within seconds change हो जाते हैं. Browning has presented a psychological patriot of a political leader कि किस तरह से वो एक पॉलिटिशियन भी है और वो पेट्रियाटिक भी है, बट उसका जो डाउनफॉल है और उसकी जो साइकोलॉजिकली उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो सारा. दिस पोएम इज़ अ सोलिलोक्वी टाइप मोनोलॉग की सोलिलोक्वी होती है कि जिसमें वो एक कैरेक्टर जो है वो ख़ुद कलामी करता है, अपने आप से बात कर रहा होता है. ही इज़ नॉट टॉकिंग टू any other character or anyone else. He is talking to himself. He is not talking to the audience even. He is just talking to himself, and he is talking about his political career. He puts in picture the brief description of his peak time, and he tells us about his mishap and a very short span of his career. He tells about in the first lines that his paths were adorned with roses and myrtles to greet the public star. Obviously, he was the one of the public stars for that time. There were hordes of people waiting to see him. The poet also recounts his tactile choices as a politician, that how he worked for his people. After passing a year, the people have developed negative feelings for their leader. They are regarding him as a traitor. He is being taken for execution. उसको मारने के लिए जा रहे हैं. The poet also points out the fickle public opinion. उसके लिए लोगों का ओपिनियन मायने ही नहीं रखता है. He is asking for God to lessen his pains and all that. So there is a sympathy that we develop for the main character of the poem.